Okay, so let's proceed our class. As we are discussing methods of psychology, or we are discussing various methods. So in that we have discussed almost four methods in the last class. First was पहला क्या डिस्कस किया था नीचे? Yeah. Reflexivity. We have discussed triangulation method. After that, cooperative inquiry, and after that, focus group discussion. Then we have already finished cooperative inquiry. So this class again, I hope we will complete 4 to 5 method. That is first is brainstorming. Brainstorming. So what is brainstorming? Fix heading in your copy. That is a brainstorming. Brainstorming. So brainstorming is basically a strategy. Brainstorming is a method, or you can say basically a strategy. What is it? It is a basically a strategy, or by this strategy we resolve any problems. हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? Brainstorming is a strategy in which ideas are generated. We generate several ideas. Ideas are generated spontaneously and uninhabitably. Uninhabitedly, right? So this is basically a problem solving strategies where the new ideas, new ways are automatically generating. So usually brainstormings we do in a two setting. One is individual setting. So brainstorming अकेले भी होता है, as well as it's also do into the groups. So it conducts it is also into settings. First is in group setting. In a group setting, and second is individual settings. Means individuals के साथ में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है और ग्रुप के साथ में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है. It's happen or it take place in both setting. First is individuals and second is group. So दोनों ही conditions में brainstorming हो सकता है. Without, right, and immediate means there will be no एक pointer without any immediate criticisms. Without any immediate criticism, provide the judgments. Provide the judgments about their potential values. तो मीन्स किसी भी इवेंट को लेकर के हमारे मन में जो नए नए आइडियाज आते हैं, लाइक व्हाइल वी डू ग्रुप डिस्कशन, हम लोग जो जीडी करते हैं, सो आपने देखा होगा, खैर
आपने अच्छी बात एक अटेंड नहीं किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट आई हैव नोटिस्ड देयर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, और वहां नए नए आइडियाज बच्चे जनरेट करते हैं, और फिर उन आइडियाज को मैं करेक्ट करता हूँ या फिर और लोग भी जो बैठे होते हैं वो करेक्ट करते हैं, सर इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल विच टॉपिक्स वी प्रोवाइड फॉर द ग्रुप डिस्कशन, उसी टॉपिक के ऊपर ही हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज गुड, एंड इन माय एकेडमिक्स टाइम्स आई डू आल्सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई होप यू आल्सो डू। मैं अपने घर में रेड मार्कर से बड़े बड़े टॉपिक सारे अपने जो एग्जाम से रिलेटेड बड़े चीज बड़े बड़े चार्ट में लिख रखे थे, अराउंड 10-15 चार्ट से, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ा नहीं, आप लोग तो खैर बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े हो। सो इन दैट केस मैं ऐसे कोई टॉपिक्स वहां से उठाता था और उठा करके लेकर जा करके कहीं नए जगह पर फिट करता। एग्जाम्पल देयर इज अ नेहरू जी, एंड नेहरू जी को सेट करता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। So automatically brain produce new thoughts. यार नेहरू जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया? Same other is there is a Nehru ji, again I connected with Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose और नेहरू जी का क्या रिश्ता था? There is a suppose नेहरू जी and there is a Pakistan, तो पाकिस्तान को नेहरू जी के साथ कनेक्ट करता था। So due to that, my brainstorming has increased. I started to generate new ideas. उसका एडवांटेज ये है कि मैं बहुत सारी चीजें जब बताता हूं तो वो मेरा अपना वर्जन होता है, किसी बुक का वर्जन नहीं। दिस आई हैव एक्सपीरियंस। सो इनिशियली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिससे हम न्यू आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स कैन बी डेवलप्ड, न्यू थॉट्स कैन बी डेवलप्ड। हाँ, अब आगे लिखेंगे, इन अ ब्रेनस्टॉर्मिंग कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, evaluative thinkings are involved. Convergence, divergence, and creative thinkings are involved. Are involved. So here is the brainstorming. Brainstorming आगे लिख देना, use mainly to create new ideas. Create new ideas in social issues which was first introduced by Osborne, और इसको सबसे पहले ऑसबॉर्न नाम के साइकोलॉजिस्ट ने, the name of psychologist was Osborne. Osborne has first introduced the concept of brainstorm. And वो Osborne कहते हैं कि if you want to create something, so for that you must have, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो brainstorming is very important for you, right? And if you will take the example of creativity, तो Osborne कहते हैं कि brainstorming से creativity बहुत अच्छी आती है। So brainstorming करने के लिए क्या जरूरी है? First thing, brainstorming required freedom. आपके ब्रेन में अच्छे थॉट तभी पैदा हो सकते हैं जब आपके पास में बहुत सारा फ्रीडम हो। There is no any specific contents, because if you have specific contents, so your mind will work according to the content, or your mind will work toward the content. So that brainstorming करते समय आप अपने आप को फ्रीडम फील करो, एंड जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले लोग हो वो फ्रीडम हो,
उनके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए. दे आर नॉट, दे हैव नो एनी स्पेसिफिक कंटेंट, एंड क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इनटू द ब्रेनस्टॉर्मिंग. जैसे हर दिन का टारगेट बनाया जाए और उसको पूरा किया करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया जाए, तो फिर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो सकती. राइट. तो दुनिया के जितने बड़े ब्रेनस्टॉर्मर्स रहे हैं, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मर्स मींस क्रिएटिव पीपल्स, सो दीस पीपल्स हैव few essential qualities. तो लिख देना, फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग few rules are compulsory. Like number one, no criticism and criteria specific. Second, unusual ideas are welcomed. Means human brain will produce some unusual ideas, unusual concepts. So we always welcomes to the unusual ideas, means which is not followed by the any particular traditions, which is not followed by the any particular rules. Next, combination and improvement of ideas. Combinations and improvements of ideas are important. And focus on the quantity. Focus on the quantitative things. Right? Focus on the quantitative things. So आप brainstorming ज़्यादा, अगर आप क्वांटिटेटिव चीजों को एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर लेके. Then next is brainstorming. Brainstorming use analysis, may use analogy. May use analogy. तो means brainstorming में analogy use हो सकता है और sometime may not be use. कई बार brainstorming में नहीं होना चाहिए, नहीं होता. Analogy means by the law of similarity principles. जैसे आपने देखा होगा अग्निबाण. सो अग्निबाण की एनालॉजी क्या है? अग्नि मिसाइल. अगेन इट वाज स्टडीड बाय ऑसबॉर्न. ऑसबॉर्न का ही कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ एनालॉजी. पर्सनल एनालॉजी, and then subject related analogy, and ऐसे से करके मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है. सो बहुत सारे टाइप की एनालॉजी ऑसबॉर्न ने सजेस्ट किया और उसका यूज हम लोग रिसर्च में करते हैं, आई मीन क्रिएटिविटी में करते हैं. राइट. सो आप लिखेंगे आगे क्या? सर दैट्स व्हाई प्रेशर में ब्रेन काम ही करता है. करेक्ट. आप एक बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी शायद आपने. वंस अकबर was enjoying music in his office, that was sung by the great man Tansen. Tansen was courtier of Akbar. I hope you know. Tansen अकबर की कोर्ट के अंदर एक रत्न थे. Means he was one of the important persons into the Akbar court. So Tansen गाना गा रहे हैं और उनका राग मल्हार वगैरह आपको सुना हो गया, शायद आपने सुना है. So Tansen was singing and Akbar was enjoying. After completing the song, Akbar said about the Tansen, "You are the best singer of this earth."
While he was completing the statement, in between that, Tansin has interrupted. No, sir, it is incorrect. ये गलत है. I'm not best singer of this sir. अकबर को गुस्सा बोले तुमसे बच्चे कोई आता है. बोले हाँ. तो बोले कौन है? बोले my teacher. Who was my teacher? Haridas. Akbar teacher's name was Tansin's teacher name was Haridas. Haridas was living into the Himalayan valleys. हिमालय के माउंटेन के जो वैलीज रीजन में रहते थे. सो अकबर ने कहा कि अच्छा तुमसे भी अच्छा गाते, चलो उनको भी सुन के आ जाते हैं. बोले बट एक कंडीशन है, आप कहना नहीं गाने के लिए, आपको इंतजार करना. बोले ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग. तो अपना ड्रेसअप वगैरह किया, नॉर्मल पर्सन की तरह पहुंच गए. अकबर एंड तानसेन टू द गुरु हरिदास. अब हरिदास के पास में वो कई दिनों तक रुके, लेकिन हरिदास को गाना ही ना है. After 3-4 days, whenever 3-4 days has passed, then अकबर बोले यार इनके गाने के चक्कर में तो हमारा पूरा किंगडम उधर वेस्ट हो जाएगा भाई, उधर भी तो काम होना है. बोले चलो वापस, ये तो बोलो सर को गाना गाएं. बोले आप कहिएगा बात. बोले फिर? बोले रुको मैं कुछ कहता हूँ. तो तानसेन अपने गुरु हरिदास का सिखाया हुआ गाना गलत तरीके से गाने लगे जानबूझकर. हरिदास को गुस्सा आ गया. बोले मैंने ऐसे कब तुम्हें सिखाया? बोले बोले इसका करेक्ट वे ये है गाने का. तो उन्होंने करेक्ट तरीके से उसको गा करके सुना. देन अकबर सेड यस ही इज बेटर सिंगर देन यू. So then Tansena said, sir, in the singing of Haridas and me, we have a big difference. Have a differences. What type of differences? Means Haridas sing whenever he wants, and I sing when you want. Meaning समझ आई बात? कि जब मैं चाहता हूँ, जब हरिदास सर मेरे तब गाते जब उनका मन करता है, और मैं तब गाता हूं जब आपका मन करता है. तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी कब में आएगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे अच्छा कब होएगा? जब आपको खुद मन करे. लाइक देयर वाज सीवी रमन. आई होप यू हैव हर्ड. सीवी रमन वाज नोबेल लॉरिएट इन 1928. From the 1928 till now, there is no any Indian scientist who got the Nobel Prize into the physics. Can you tell me why? Even though in India more than 750 laboratories are there, including DRDO, ISRO, and CSIR, etc. 750 से भी ज़्यादा lab है. Why? Because that scientists who are working in 750 labs, they are just for the money. They are working for just money. जितने भी स्पेस के बड़े साइंटिस्ट हुए ना, वो चैलेंज को लेते थे. So they have creativity. Means creativity does not comes in under any pressure. मैंने नहीं बोला, ऑस्बॉर्न ने बोला. So sir, if you have read 10th class NCERT, very interesting story is written in English. CBSE की बुक में बहुत अच्छी स्टोरी लिखी. That story is what? Once Dr. Kalam was chairman of Thubba. You know that? Director of Thubba. Thubba कहाँ पर बताओ? No. It is in Kerala. First rocket launching center was set up in Kerala. Thubba. केरला में मिले. तो वहां पर सबसे पहले पुरानी वाली जो साइकिल वाली वीडियो पिक्चर आपको दिखाई पड़ती होगी, जो सैटेलाइट लेके जाते हैं, वो केरला की. So Dr. Kalam was working at there as a director. So there was a scientist who was assistant of Dr. Kalam, who was working under Dr. Kalam. And Dr. Kalam से एक दिन साइंटिस्ट आया, बोला सर आज मुझे घर पे जल्दी जाना है. बोले कितने बजे? बोले 5 बजे जाना है. Usually scientists go approximate 8 p.m. 9 p.m. like that. तो बोला जल्दी जाना है. क्यों? बोला वो सर बच्चों को एग्जीबिशन देखना है. बोले कोई बात, चले जाओ.
साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट था वो बिजी हो गया काम करने, बिकॉज स्पेस प्रोग्राम इतना आसानी से इतना बड़ा नहीं बन गया. स्पेस साइंटिस्ट हैड डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. वो लगातार काम करता रहा और करते करते वो रात को 8 बज गए उसको. और फिर वो घड़ी देखा, तब उसको होश आया, अरे यार रात को 8 बज चुके और सब बाकी लोग भी अपने काम में बिजी हैं. Then suddenly he run to the house. घर से वहां से भागते गया. केरला में बारिश भी ज्यादा, भीग गया रूम तक जाते जाते. तो पहुंचा वहां पर और फिर उसने देखा उसकी वाइफ ने गेट को खोला, बेल बजाया तो वाइफ बोली क्या लोगे, चाय या कॉफी. सोच रहा अरे हो क्या गया, इतने प्यार से वाइफ बोल रही है कि चाय या कॉफी. नॉर्मली होता है कि अगर कोई प्रॉमिस कर दो तो फिर देखो उनका काम लो, राइट? इट हैपेंड और नॉट? बेटा आपको नहीं पता, मुझे आप बोल दो कि मैं 9 बजे आ रहा हूँ घर पे और 9 बज के अगर 9:30 बज गए वहां तक तो बर्दाश्त हो जाता है. बट इफ यू आर अबव मैन दैट, देन स्टार्टेड टू, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ डॉक्टर कलाम. अच्छा खैर वो साइंटिस्ट घर में पहुंचा और पहुंचने के बाद वाइफ ने बोला कि कपड़े चेंज करो, मैं टी या कॉफी जो चाहिए बोलो मैं देती हूँ. वो सोच रहा है यार झगड़ा भी नहीं कर रही, कुछ गुस्सा भी नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या रीजन, वाइट इज. सो साइंटिस्ट ने खैर उस समय बोल दिया कि मुझे कॉफी पिला. बट कुछ समय के बाद जब उसने चाय पी लिया, फिर उसने अपनी वाइफ से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं. बोले तुम्हें नहीं मालूम. Then he replied, then she replied, Dr. Kalam has come to our house और बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने वो लेते हैं. बताओ क्यों? मतलब सुन भाई, डॉक्टर कलाम बच्चों को लेके खुद चलेगा एग्जीबिशन दिखाने के. एंड दिस इज रियल इवेंट, नॉट दिस इज स्टोरी. खुद लेके चले गए. अब उस साइंटिस्ट ने डॉक्टर कलाम के बारे में वो बातें लिखा, बोला सर दिस इज ट्रू लीडर. कैसे? क्योंकि डॉक्टर कलाम नहीं चाहते थे कि वो साइंटिस्ट अपना काम बीच में छोड़े, बिकॉज ही वाज डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. एंड एट द टाइम ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, टाइम इज नॉट कंपल्सरी. टाइम, इट इज नॉट बाउंडेड विद टाइम्स. किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए. इट रिक्वायर्ड टू मच फ्रीडम, देयर इज नो प्रेशर. तो कलाम साहब एग्जीबिशन दिखा के लेके खैर आ गए. बट उस साइंटिस्ट ने लिखा कि कलाम साहब बहुत ही महान व्यक्ति थे. सोचो उस साइंटिस्ट का काम भी नहीं रोकना चाहते और उन बच्चों का एग्जीबिशन भी जाने से नहीं रोकना चाहते. So he was a great leader. Getting my points? And so brainstorming have a several example. Right now you can take the all iPhones. iPhone की जितनी सीरीज बनती है, all comes by the brainstorming. And I hope I have tell the story of सुंदर पिचाई. बहुत बार बताया इनकी स्टोरी. गूगल मैप कैसे बनाया, बताया नहीं बताया? So that is due to the brainstorming. So brainstorming is one of the importance. सर इनसाइट लर्निंग से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, इनसाइट लर्निंग होता है क्योंकि सर सडनली जो आइडिया आया हमारे दिमाग में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन. आगे लिखना नेक्स्ट. टेक्निक्स फॉर द कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. techniques for conducting brainstorming. So what techniques are there for the brainstorming? First is nominal group techniques. Number one, nominal
group techniques. Right? Nominal groups means in this basically each member will write their ideas in own papers. हर किसी को अपने आइडियाज अपने पेपर पर लिखने का राइट है and that idea should be sent to the leader who is organizing brainstorming. Best example जो भारत का रुपए का सिग्नल है, आपको मालूम है सिंबल ये कैसे मिला था मालूम है? दैट इज अ नॉमिनल ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप से। इसमें कहा सबको पूरे भारत में एक ओपनली देयर इज एन ओपन अनाउंसमेंट कि जिस सब लोग अपना अपना सिंबल बनाइए और सिंबल बना करके भेज दीजिए, जिसका सिंबल बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करें और उसके रीजन भी लिखने पड़ेंगे क्यों आपने चूज किया, क्या लॉजिक है। तो ये रुपए पता किसने सेलेक्ट किया होगा? नहीं मालूम, ऐसे हवा में ले लिया क्या? तो इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया से सब जगहों से अपने अपने आइडियाज मंगाए और उस आइडियाज को सब लोगों ने बना बना के इन्वेलप में किसको भेजा? भारत सरकार। Then government of India has selected among them, ये एक IITM का है and he is right now a professor of Assam University के प्रोफेसर है। Even he belong to Bombay. Google करेंगे दिखाएंगे who has given the symbol of who has given the symbol of rupees। उनकी पूरी डिटेल में उनको सरकारी जॉब भी मिला, पैसा भी मिला, बहुत कुछ मिला, गवर्नमेंट ने कहा था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर न्यू थिंग बनाना था ना, तो कौन सा क्या किया उन्होंने? नॉमिनल ग्रुप्स मींस ईच एंड एवरी वन विल गिव देयर आइडियाज इन द पेपर्स सेपरेटली, नॉट सिटिंग टुगेदर। हर कोई अपने अपने आइडियाज लिख करके दे देगा, जिसका बेस्ट होगा उसका सिलेक्ट होगा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? इन नॉमिनल ग्रुप each member will give their ideas in writings in the writing then head or that क्या बोलेंगे observer will select among the best. Example, rupees, symbol of rupees. So it is a democratic method, but it is time consuming process. It is democratic method, but it is time consuming process. The next is a round robin method. The round robin method. Second method is a round robin method. Right? Round robin method means each member, अब इसमें क्या था कि किसी एक आइडिया सेलेक्ट होना है, बट इसमें क्या होगा? Into round robin method means each member will give their ideas and each member will contribute, लिख देना, each member will contribute in the development of ideas in sequence. In the sequence.
एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ कार डिजाइनर, इमेजिन करो टायर की डिजाइनिंग कोई और कर रहा है, इंजन की डिजाइनिंग कोई और कर रहा है, आउटर की डिजाइनिंग कोई और कर रहा है. So that each member have a different roles to design the things. हर मेंबर्स उसमें अपने अलग अलग तरीके से चीजों को डिजाइन करेगा और डिजाइन करके वो बनाएगा. जी सेपरेटली ऊपर वाले में आइडिया सेपरेट लिखते थे, किसी एक का सेलेक्ट होता था, और नीचे में क्या है सब लोग आइडियाज लिख रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा एक लिखेगा, कुछ हिस्सा दूसरा लिखेगा, कुछ हिस्सा जस्ट इमेजिन करो इफ देयर इज अ मूवी. So movie have three parts. First is the beginning, middle part and climax part. तो beginning part किसी और से लिखवा दिया, middle part किसी और ने, and climax part किसी और ने कर दिया. So all three members contribute in the development of one movie or one idea. This question finally Vijesh. Finally. Next is तो क्या समझना है बेटे इसमें कि all members will give their ideas. There is not कि बस एक ही ने आइडिया दे दिया और हो गया. Next is electronic brainstorming. Electronic brainstorming. Electronic brainstorming is another techniques. So this enables us uses of technology such as computer, internet, etc. Right? Computer, internet, etc. for the brainstorming. Example, just you can take uh, any of the mobile consumers. So mobile consumers data, एक मैं मूवी देख रहा था, I was watching a movie. उस मूवी में उसको क्राइम को पकड़ना था, तो जो हीरो था, हीरो ने क्या किया, पहले जो जहां पर टेलीविजन के ऑफिस थे या फिर जो चैनल्स वगैरह के हेड ऑफिस होंगे, उसमें उसने फोन किया, उसका कोई दोस्त था, तो बोला इस समय देखो कौन सा चैनल सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं. देखा हुआ कोई ऐसी मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है ना, तो वो होता कि इस समय देखो सबसे ज्यादा चैनल कौन सा लोग देख रहे हैं, तो वो उस चैनल के ऊपर कुछ ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है और ब्रॉडकास्ट करके वो क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है. So technology is used to basically resolve many issues and many problems, और फिर उसमें भी लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएगा. Get it? So next is बस इतना ही रहने दे टेक्नोलॉजी के अंदर. एक right, other is one concept is also brain writing. हाँ, brain writing. Brain writing means write down their ideas on the paper rather than any electronic device. On paper rather than any electronic device. So initially this is used
यूज फॉर एनी रिसर्च इट इज इक्वल टू साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस तो देखते हैं ना, साइनॉप्सिस हाथ से लिखा जाता है। पूरी प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन कर लेते थे, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्या आप करने वाले हो, कितना करने वाले हो, कहां से करने वाले हो, ऑल दैट आइडियाज वर रिटन एट देयर, और वो सारे आइडियाज को ही लिख करके वो फाइनली उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट इज there. Next is advantage and disadvantage of brainstorming. First, it is leading social laughing. Social laughing what? Social laughing में काफी हद तक there is a concept of social laughing. So it is useful in social laughing. Social laughing means it is used just uh, it is just used for the diffuse responsibilities. सोशल लॉफिंग का मतलब जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हो, दैट इज सोशल लॉफिंग, राइट। और सोशल लॉफिंग में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि देयर इज अ इनडायरेक्ट रीजंस बिहाइंड द डूइंग ऑफ दैट टास्क। जो पढ़ा होगा सोसाइटी में पढ़ाया जाता है, सोशल लॉफिंग नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, तो सोशल लॉफिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी पर्सन का डायरेक्ट कोई भी मीन्स ना हो फॉर द डूइंग एनी टास्क, बट इवन देयर इज अ इनडायरेक्ट मीन्स फॉर द डूइंग टास्क। जैसे इमेजिन करो एलआईसी एजेंट के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल लॉफिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। कैसे में वो प्रॉफिट बताएंगे आपका है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट किसका होगा जी? कंपनी का या खुद का ज्यादा होगा? हाँ। सो एंड अदर इज सोशल लॉफिंग हमारी सोसाइटी में बहुत देखने को, फिर से लिख लो कहीं पर या लिख लो, पूरा डिफाइन कर लो। सोशल लॉफिंग refer to the concept that the peoples are exerting less effort when they working collectively as a part of group. पहले आप and there is hidden sense। कई बार जो वो टास्क आपको बताएगा उसके पीछे उसका अपना कम पार्टिसिपेशन है। जैसे बोलो कि अनीता खूब सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपना रोल कम करना चाहता हूँ। तो सोशल लॉफिंग में नॉर्मली लोगों को बिलीफ होता है कि ये काम खुद
वो कर डालेगा तो मैं क्यों करूं, मेरे किए बिना भी तो हो जाए। इट हैपन और नॉट। जैसे घर में कोई टास्क होता है, मान लो 4 लोग घर में हैं और चारों में से चारों वेजिटेबल ले आ सकते हैं, तो कभी कोई दिन ऐसा आता है चार के चारों सोचते चलो आज मैं नहीं ले चल रहा तो ले लेंगे, दूसरा भी यही सोच रहा है, तीसरा भी, एंड एट द एंड किसी ने वेजिटेबल नहीं लाई। इट हैपन और नॉट। हाँ, मेरे घर में भी होता है, इसीलिए वाला एग्जांपल दिया। सो आई हैव नोटिस, बिकॉज हम लोग कभी जाते हैं तो भाई लेके चला गया, नॉर्मली कभी कोई जा रहा है सेलिंग कर रहा है तो घर में उधर जो वाइफ या कोई बच्चे वगैरह घर में है, 2 लोग भी ले लेते हैं, तो हम लोग सोचते चलो कोई ना कोई ले ही लिया, क्या जरूरत है, फिर रात को पता चला यार कुछ है ही। It happened or not? This I'm telling real example, rather than कि teacher and so many. So it happened. तो because यहाँ पर collectively हमें लगता है कि वो काम वो कर लेगा, मैं क्यों करूँ। एग्जाम्पल मान लो सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा देखा ना, तो गिर गया वो व्यक्ति, सोचते मैं क्यों उठाऊं, कोई न कोई तो इसको आके उठा ही देगा। इट हैपन और नॉट? नहीं होता, बट लोग करते हैं ना कि चलो मैंने कोई और सही। सो देयर इज सोशल लॉफिंग। तो इसमें लोग डायरेक्ट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते नहीं, उनको लगता है चलो जाने दो। खैर, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोशल लॉफिंग भी होता है, पता क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो, दूसरे लोग तो क्रिएटिविटी कर ही लेंगे, मींस अदर पीपल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाई आई विल डू, राइट? अदर इज अदर क्रिटिसिजम्स। लिख क्या है, एडवांटेज या क्रिटिसिजम से लिख रहे हैं? ओ गलत हो गया फिर। एडवांटेज पे लिखो। एडवांटेज, इट डेवलप्स न्यू आइडियाज, it develops new ideas which is cohesive, मीन्स नए नए आइडियाज को डेवलप कर देता जो कि कोहेसिव होता है, एप्लीकेबल टू ऑल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल, इट इज एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल। नेक्स्ट, other advantage, used to resolve many field problems, including psychology or any real life problems. Brainstorming is powerful tool for generating new ideas and solving the problems into groups. Next part, अब आप इसकी criticisms लिख देना। There is the first criticism, production blocking. Production blocking क्यों? क्योंकि sometimes the people are just listening to the others ideas, कई बार दूसरे के आइडियाज सुनते हैं। सेकंड इज सोशल लॉफिंग, कि चलो मैं नहीं क्रिएट करूंगा तो कोई नहीं दूसरा कर लेगा। नेक्स्ट,
डेविल्स एडोकेसी जानते ना? डेविल्स एडोकेसी, डेविल्स मतलब बहुत ज्यादा सुपरफिशियल बातें करते हैं लोग। डेविल्स Sir, there is a advocacy tables. डेविल्स एडोकेसी नहीं सुना? डेविल्स एडोकेसी मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। एग्जाम्पल, वन थॉमस अल्वा एडिसन आस्क टू द पीपल, आई विल क्रिएट द बल्ब्स, जब मैं दुनिया को उजाला कर दूंगा। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बोले ये क्या मजाक करता रहता। तो बहुत सारे जो दुनिया के लोग बड़े इन्वेंटर्स रहे हैं, वो बहुत बार मजाक बनाए जाते। रीजन मीन्स बिकॉज उनकी बातें लोगों को बहुत आर्टिस्टिक लगती है, व्यवहारिक लगती है। सो ऐसे ही कई लोग जो डेविल एडवोकेसी टाइप के लोग होते हैं कि अरे तो मजाक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाइक इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी को बनाती है, बट विपक्ष उसका मजाक उड़ाता है। अपोजिशन पार्टीज यूजुअली क्रिएट जोक्स एंड फन ऑन दैट इश्यूज। So that next is group polarizations. Group polarization what? Means that the group peoples divided into the parts, वो एक opinion create ही ना कर पाए। So group polarizations usually is a barrier for the brainstorming. Right? Next is बस इतना ठीक है। How many you have written? 4. So there is a brainstorming, and brainstorming have several concepts and like brainwritings and etc etc. हाँ, ये टेक्निक्स भी हैं। अब आप लिखिए applications of brainstorming in psychological research. Brainstorming is powerful tool for group the problem solving in groups. Yeah, it is powerful tool for problem solving in groups. It allows for generation of large number of ideas. Large number of ideas. Encourage equal participation among the group member. So it can be used for pooling of knowledge and expertise. Means बहुत सारा knowledge और expertise के लिए भी कई बार सोशल टॉपिक। अब आप करना क्या नाम है इसका? Brainstormings we do. We do brainstormings due to the various reasons. तो नेक्स्ट इज आगे क्या है? इन द स्टडी ऑफ इमोशंस, इमोशन में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, बिकॉज इन द स्टडी ऑफ इमोशन एंड मोटिवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट। Like emotions and motivations are too much controlled by the social factors or extraneous factors. तो बहुत सारे जो इमोशंस मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एक बहुत सिंपल हिंदुस्तान में इमोशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताता है। किसी के घर में डेथ हो जाती है, देखा होगा तो उसके घर के आजू बाजू रिलेटिव सारे लोग आते हैं, उसके घर में नहीं आते। क्यों आते हैं? बिकॉज दे गिव्स द डाइवर्स व्यूज। भाई साहब, जो आपके साथ हुआ दुखद है, हम आपके दुख में शामिल हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, ये बोल के जाते हमारे घर में, तो उससे थोड़ा हमारा इमोशंस हल्का होता है। फिर दूसरे ने कहा बहन आपको तो कुछ नहीं, इससे कई गुना ज्यादा हमने दुख झेला। आई होप इट हैपेंड और नॉट। तो इमोशनल मैनेजमेंट is done by basically
ब्रेनस्टॉर्मिंग। मोटिवेशंस के भी ऐसे होते हैं। मोटिवेशंस बिकॉज, अच्छा, जो स्टॉक जैसी चीजें क्यों बनाई गई, जो स्टॉक सुना कि नहीं सुना है? सुना है ना, बड़े बड़े जो, क्यों? बिकॉज देयर इज अ डाइवर्स वे टू अंडरस्टैंड द पीपल्स इमोशंस। मोटिवेशंस को समझने के बहुत सारे तरीके वो बताते, देखो इस कंडीशन में भी आप बाहर निकल सकते हो। इफ यू आर एट दिस पोजीशन यू कैन आल्सो कंट्रोल एंड यू कैन आल्सो वर्क ऑन इट। तो बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स एंड टेक्नोलॉजीज सिखाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। साइकोलॉजी में और कहां पर थेरेपीज के समय टू डायग्नोज द डिसऑर्डर्स। अब जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लोगों का कुछ वेलबींग करना है, इन दैट केस वी कैन आल्सो डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट, सो दैट देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल आया हुआ है, which comes in 2021, discuss the challenges during the group brainstorming process। डिस्कस challenges मिला आपको अनीता, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 28। डिस्कस challenges during group brainstorming process। मिल गया ना आपको? क्या challenges हो सकते हैं? polarizations, very popular, social laughing and ग्रुप थिंक इज आल्सो प्रॉब्लम्स। ग्रुप थिंक की मतलब कई बार वो सोचते रहते हैं और बिल्कुल वो आर्टिस्टिक डेविल की तरफ चले जाते हैं, मींस बिल्कुल आर्टिफिशियल थिंकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, व्हिच इज आउट ऑफ द रियलिटी। दैट इज कॉल्ड विल एडोकेसी। गेटिंग? सो दैट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, यही तक है, इसके बाद खत्म है। नेक्स्ट स्टडी यू शुड फिक्स इन योर कॉपी, दैट इज, अगला मेथड कौन सा है? यस, हाँ चलो लिख लो आप, नैरेटिव एनालिसिस। suffix heading, that is narrative analysis। narrative analysis, so what is narrative analysis? narrative analysis, narrative analysis, as name suggested, narration is just equal to right now your social media chats। getting? narrative means your chattings। कभी घर वाले पकड़ लेते हैं तो कितना अच्छा डांट मिलती है, पहले ऐसे टीनेज में तो ज्यादा होता था। इट इज, तो पूरी नैरेटिव की एनालिसिस करें। मैं करते ना, जो आप चैटिंग करते हैं, चैटिंग मीन्स बातचीत, एंड सम टाइम वो पब्लिक भी हो जाता है, जैसे कुछ कुछ केस में हमने देखा था अभी जल्दी में जो हुए थे। एसडीएम, लाइक एसडीएम कहाँ की थी वो? उत्तर प्रदेश। सो narrative analysis is basically a techniques where the narration between the peoples are analyzed by the psychologist to find out its psychological perspectives, psychological dimensions। आप अपने दोस्तों से बात करते हुए आप अपनी सारी एंजाइटी को एक्सप्रेस कर जाते हो। इज इट ट्रू और फॉल्स? You express your all mood disorders, mood swings, all types of problems while you are going to do narrative analysis। Getting my points or not? करते नहीं करते?
सो जो दो लोगों के नरेशंस है उसी से सब कुछ उसकी साइकोलॉजी पकड़ में आ जाए. So this is a research techniques and which is basically in quantitative natures, qualitative natures, and in this researcher takes the narrations of the two or more peoples and then analyze and find out its psychological consequences. तो आप लिखो narrative analysis was studied by Byers, B-Y-A-T-T, Byers, studied by Byers in 2000, 2000 में उन्होंने स्टडी किया. एंड क्या लिखते हैं, नैरेटिव एनालिसिस मीन्स द एनालिसिस ऑफ everyday conversation with peoples to find out its psychological means, find out its psychological means. Right? So the researcher puts narrations into sequence, and researcher puts narrations into sequence and find out its its basic developmental process सीक्वेंस में रखेगा और उससे उसकी साइकोलॉजी का पूरा डेप्थ पता चलता है. एक मैं नरेशन अपना बता रहा हूँ, मजाक का और रियलिटी भी है, सच में. वन डे एक ऐसे तो कोई एक मेरे फेसबुक पे से आया, बोला हाय सर. तो मैंने बोला हाय सर. बोले कि सर आप क्या करते हो. तो बोला कि आई एम टीचर. बोले किस क्लास को पढ़ाते हो. तो मैंने कहा कि आई एम यूपीएससी, आई टीच द क्लासेस ऑफ यूपीएससी. तो मैंने कहा, बोले आई वांट टू डू यूपीएससी. मैंने कहा वेरी गुड. सो हैव यू स्टार्टेड. बोले येट नॉट बट आई विल सो. तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, चलो. तो मैंने कहा व्हाट इज योर एज. सी देन मेंशन कि आई एम 37 ईयर ओल्ड. तो मैंने कहा डू यू हैव यू रेड द आइडियाज और प्रोस्पेक्टस ऑफ यूपीएससी. बोला नो बट आई वांट टू डू. तो फिर थोड़ी देर में उसने जो है अपनी फोटो भेज दी. दैट वाज अ फीमेल. सो उसने फिर फोटो भेज दी. मैंने कहा व्हाई आर सेंडिंग. लेकिन नो जस्ट आई एम नॉट यूपीएससी बट जस्ट मैं एक्चुअली में मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो मैंने आपका नंबर वहां से लिए थे. एंड जस्ट आई वांट टू कई लोग फोन पे बातें करते हैं ना, चैटिंग करते हैं. एग्जांपल सीमा हैदर है, क्या नाम हो, अंजू, लाइक दैट. तो धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो इस कन्वर्सेशंस को मैंने अपने पहले घर में दिखाया. तो मिस आई रियलाइज कि इसका साइकोलॉजी क्या रहा होगा. अब जस्ट इमेजिन करो आई एम जस्ट एडोलेसेंस एज, या मैं ऐसे माइंडसेट का होता है कि मैं कहता कि मैं भी अपनी फोटो भेजता और चैटिंग्स होती, या फिर ऐसे धीरे धीरे नैरेशंस बढ़ते जाते और फिर दैट नैरेशंस लीड टुवर्ड द अदर डायग्नोसिस व्हिच इज मे बी डिजास्टर्स फॉर द फैमिली लाइफ. इट हैपेंड. सोशल मीडिया पे जो बच्चे बहुत गलत डायरेक्शन में कई बार चले जाते हैं ड्यू टू दिस रीजन. आई होप इट इज ट्रू. गॉट है ना. सो बीइंग अ साइकोलॉजी teacher, being a psychologist student, we need to analyze the conversations of the two people. And India is a country of story world. आप जानते हो क्यों?
बिकॉज इन द अर्लियर फेज ऑफ द इंडिया भारत के जो लिटरेचर्स थे वो मेनली ओरली नरेट किए जाते थे। I hope you know well. So mostly only narrated story pass from one generation to other generation. उनकी कहानी उनकी कहानी उनकी कहानी. So by that narrations, we can initially understand the psychology of that peoples. कुछ समय खैर बाद में लिखा गया, but जो narrations बनाई गई, जो नैरेशंस डिक्टेट किए गए, तो आज जहां दुनिया में भारत में बहुत सारी घटनाएं हैं which need to be analyzed by the psychological perspective. So narrative analysis can play significant roles. तो आप लिख देना, क्या लिखना? There is Murray, there is a psychologist Murray, Murray, Murray and Sorbin, Sarb, Murray and Sorbin said, we are born into a storied world. We live our life through the creation and exchanges of the narrations. We live our life through the creation and exchanges of narration. Narrations reflects the personal problem, family problem, financial problems, and health problems. Narrations provide the structure to the personality. So psychologists believe that analysis of narration provides a detailed account of any individuals. Provides Detailed account of any narration, anyone's side, any individuals. Murray has studied basically a woman. She was suffering from breast cancer. तो आप उसके इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके थॉट को उन्होंने स्टडी किया. Murray had basically studied a woman. She was suffering from breast cancer, and he has collected lot of data from that woman and her psychological mental status. तो उसकी बातचीत से ही पता चल गया कि वो किस साइकोलॉजी में जी रही है. सो मैंने मस्ती मस्ती में बोल दिया कि जो नैरेटिव एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस से किसी पर्सन के जीवन को आप निकाल सकते हैं कि वो आखिर क्या था, क्यों था, कहाँ था, कैसे था, सारी डिटेल निकल गया. सही बात है ना? मैरिज के लिए यस, बहुत यूजफुल है. एंड नॉट ओनली द मैरिज, ऑल टाइप्स ऑफ द लाइफ. आपके जो बातचीत है आप अपने दोस्तों से करते होंगे ना, जैसे आप आज रोज की तैयारी का डिटेल मान लो घर वालों को दे रहे, पेरेंट्स को दे रहे होते हैं, उससे भी काफी कुछ पता चल जाता है.
many IAS officers who were killed in the time at the time of their duty. तो उनकी जो चैट्स होती है कभी कभी उनकी फोन कॉल लीक हो जाती है. आई होप यू हैव हर्ड. एक उन्नाव केस हुआ था, आपने नाम सुना हुआ था. उन्नाव में एक डीवाईएसपी को उन्होंने मार दिया. डीवाईएसपी में सीओ सर्कल ऑफिसर को उन्होंने कुछ कल्प्रिट लोगों ने मारा, गोली मार दी. तो वो अपने ऑफिसर्स को, सीनियर को फोन करके जो बातें बताता था, उस बातों से क्लियर लग रहा था कि उसके जो कई सीनियर या जूनियर उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे. देयर वाज वेरी पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज. Okay? So the narrative analysis has to understand human and about human behaviors. Can we proceed? Okay. Next. अब बस इसमें इतना ज्यादा कुछ इसके डिटेल कुछ नहीं, ये ज्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है. नैरेटिव एनालिसिस अभी नया मेथड है, नया कॉन्सेप्ट है. प्राइमरी किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं. आगे लिखिएगा. नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? दैट इज अ एथनोग्राफिकल रिसर्च. ये समझने वाला. This is the importance for your understanding what is ethnographical research. Ethnographical research. Here is ethnographical research means a research which conduct on any ethnics. Ethnics what? Or any groups. That groups have their own dignity. That groups have their own dignity. So doing research to any ethnics without breaking off that dignity of that groups, that is ethnography. हर ग्रुप्स की कुछ ना कुछ अपनी गरिमा है, मर्यादा है, और उसी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं. एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू डू स्टडी ऑन ट्राइबल ग्रुप्स, व्हाट? सो ट्राइबल्स हैव देयर ओन एथनिक्स. ट्राइबल्स लोगों की अपने एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मोरल्स आर देयर. As per their ethics, principle and moral, they act and behave. वो एक्ट भी करते हैं, बिहेव भी करते हैं. So if we want to study the any ethnic groups and if we want to collect the data about that ethnic groups, if we follow the ethics and culture of that groups, that group will feel assimilated and they will feel similar to you and they will provide you the real data. Means अगर किसी ट्राइबल की स्टडी करना है तो पहले आपको ट्राइबल की भाषा सीखनी पड़ेगी, ट्राइबल के लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे, कल्चर सीखने पड़ेंगे. You will learn about the tribals, ethnics, codes, moral principles, सब कुछ सीखना पड़ेगा. और फिर जाकर के आप उस ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हैं. बिकॉज आप उस एथनिक ग्रुप्स के अंदर स्टडी करने के लिए चले गए, बट वो आपको डेटा ही नहीं प्रोवाइड करेंगे. जैसे इमेजिन करो कि वी वेंट टू द अनीता's हाउस. सब लोग अनीता के घर पे पहुंचे. जाएंगे नहीं, चिंता मत कर, नहीं तो पता लगा पूरी क्लास में टेंशन बैठे थे, मेरे घर पे सब लोग जाएंगे. तो सपोज हम लोग चाय पीने के लिए गए अनीता के घर, है ना, यहाँ नहीं, जहाँ घर, यहाँ तो पता है कि स्टूडेंट लाइफ होती है. सब लोग चाय पीने के लिए पहुंच गए. अब इनके घर का रूल है कि घर के अंदर घुसने के पहले आपको अपने शूज और स्लीपर बाहर निकालना होता है कि नहीं, कई घर के रूल्स. जैसे मेरे घर में है, तो कोई फूड खाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उससे साथ खत्म करें. अगर वो पहले खत्म करता है तो भी इसको डांट, कई बार कहते हैं नहीं यार ये कैसा व्यक्ति कितना जल्दी जल्दी खा रहा है. और कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो खाते समय चम्मच को, स्पून को पटकते हैं प्लेट के अंदर. आई होप यू हैव सीन. भाई पटकने वाली चीज है ही नहीं हो तो. So that's
People do such type of actions and behavior. तो ऐसे लोगों को अपना समझेंगे नहीं और डेटा फिर रियल प्रोवाइड. So being a researcher, if we want to study any ethnics, जैसे साउथ इंडिया में इलुरु ट्राइबल्स पाएगा, पुलियार नाम सुना है ट्राइबल्स के, पुलियार, other is ऐसे there is other tribals which is in Andaman Nicobar, Sentinelese tribals, Methi tribals, में क्या बोलते मिट्टी मिट्टी हाँ मिट्टी tribals. Other is if you want to study Bodolands tribe, Bodo tribals. So we need to follow their culture first, because otherwise these peoples will not provide you their original data. तो इस तरह का रिसर्च करने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, पूरी समझदारी रखनी पड़ती है, तब जा करके आप ऐसे ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं. अदरवाइज ग्रुप विल नॉट अलाउ टू स्टडी टू यू. लिखो एथनोग्राफिकल रिसर्च, हेडिंग फिक्स कर लो कॉपी में. एथनोग्राफिकल रिसर्च, right? Ethnographical research is a way to carry out research by focusing on the understanding of other ethnics and studying the behaviors without breaking the norms, of the ethnics, without breaking the norms of मीन्स किसी भी एथनिक ग्रुप्स के नॉर्म्स को बिना तोड़े उस एथनिक ग्रुप्स की जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज व्हाट. सो it is a source to know the cultural description. आगे लिख देना. There is a psychologist name is Spredy. स्प्रेडी दो हैं, एक डेविड एम करके नाम साइकोलॉजिस्ट, डेविड एम. So David M basically said that it is the way to collect the cultural description, cultural description. So here researcher examine any ethnic groups, in detail, right? तो डिटेल में करता है. So for that, अब क्यों करते हैं? Why we do ethnographical research? Why? To develop the history of the culture of any cultural groups बोल सकते हैं. आप किसी भी कल्चरल ग्रुप्स की हिस्ट्री को जानने या डेवलप करने के लिए हम लोग एथनोग्राफिकल रिसर्च करते हैं. टू डेवलप द हिस्ट्री ऑफ एनी एथनोग्राफिकल ग्रुप्स. दैट इज टू डेवलप द हिस्ट्री. व्हाई दैट इज, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? Yes.
Next is, ha, to understand the present condition of any ethnic groups, right? Then क्यों करते हैं? To understand the scientific temperaments of any social groups. किसी सोशल ग्रुप का साइंटिफिक टेम्परामेंट जानने में के लिए भी हम लोग एथनोग्राफिकल रिसर्च करें. टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक टेम्परामेंट्स ऑफ एनी एथनोग्राफिकल एनी एथनोग्राफी. किसी भी ग्रुप्स की एथनोग्राफी समझने में भी हमें हेल्प करता है. Then, to frame the policies and programs for that groups. To frame the policies and program for groups. As I hope you know, सर पता होगा कि I have studied in Southern India केरला. मेरी पढ़ाई जो केरला से थी, academics मैंने वहाँ से. So while I was doing my academics, तो हमारे स्कूल का एक ट्रिप गया, एक लेक थी केरला में. So उस लेक के अंदर हम लोग कूद के नहा रहे, और वो पूरा जंगल एरिया था. वैसे केरला में जंगल ही जंगल है. So we were bathing, और हमारी गाड़ी जो थी लगभग 2 किलोमीटर नीचे पहाड़ी के नीचे उतर गए. तो हम एंजॉय कर रहे थे, तभी किसी बच्चे को स्कॉर्पियन ने काटना मींस डंक मारना, और तुरंत फेंट हो गया. अब हमारा क्लासमेट था, तो हमें चिखम चिल्ली मच गई, रोना शुरू हो गया. क्या हुआ, इसको कैसे हो गया? तो दिखाई पड़ा कि बगल में किस स्कॉर्पियन है, उसने उसको डंक मारा. बहुत ब्लैक कलर का. दिस वाज टू मच टॉक्सिक, बहुत जहरीला, पॉइजनस, नॉट बिकॉज़ टू मच पॉइजनस. और हम लोग चिखम चिल्ली करें, तभी एक ट्राइबल बच्चा आया अंदर से. जैसे कुछ दूरी पे ना घर बने हुए थे, ट्राइबल का एक बच्चा आया, और वहां से वो उसको देखा, विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स कुछ घास लिया और ऐसे रगड़ के उसके नाक में डाल दिया, और कुछ ही सेकंड के अंदर, विदाउट आई थिंक कंप्लीटिंग 1 मिनट, उठ के बैठ गया. बोला यार यहाँ दर्द हो रहा है, मींस जहां पर स्कॉर्पियन ने डंक मारा था. रिमेनिंग ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इज ओके, आई हैव नो पेन. So it means I want to see that tribals have very good scientific knowledge. They have very good understanding over medicines. It needed to be utilized by the mainstream of the scientists. इसको यूज करने की जरूरत है, सही से इसका इस्तेमाल करने की. Is it true or false? तो भारत में या दुनिया में बहुत ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं. That resources we need to utilize for the well-being of the society. That we need to utilize. Got? तो जो ट्राइबल्स, हमारी दुनिया में जितने भी ट्राइबल्स हैं, सबके पास बहुत सारे हेरिटेज हैं, और इनके लिए बहुत सारी दिक्कतें भी. Like the rape ratio is very much less into the tribal community. Just need to understand why it is. उनके यहाँ कौन से लीगल्स हैं जो इस चीजों को कंट्रोल कर ले जाते हैं. There is less gender discrimination than us. Getting? So tribals need to study. So tribal means जो बहुत सारी ऐसे सोसाइटी, आप कभी ज्योग्राफिक नेशनल चैनल वगैरह देखते होंगे, डिस्कवरी वगैरह में कई साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राइबल के ग्रुप में जाके स्टडी करते हैं. बट इफ दे आर डूइंग जिंगलाला, तो भी उसके साथ में जिंगलाला करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दैट इज द एथनोग्राफिकल रिसर्च. लिखना, एथनोग्राफिकल रिसर्च है basically 2 types. Emic, E-M-I-C, emic and etic. Emic means in group, means अगर कोई भी
ग्रुप का मेंबर ही जाकर के उसकी स्टडी करता, सो दैट इज एमिक. लाइक डॉक्टर अम्बेडकर सेड, the Dalit history can be right best by the any Dalit. दलित का सबसे अच्छा इतिहास कौन लिख सकता है? दलित ही लिख सकता है. डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा क्योंकि उनकी पीड़ा वो जान सकता है. सो इट इज अबाउट एमिक. किसी ट्राइबल का पर्सन जो पढ़ा लिखा हो वो जाकर के ट्राइबल के बारे में कुछ स्टडी करे, दैट इज एमिक. एंड व्हाट अबाउट द एथिक आउटसाइड? Outside means who is the outsider of the groups but participating into the research, that is ethic and doing research. So for the ethnographical research we follow the some steps. Number one, अगर ethnographical research करना चाहे तो पहले क्या? First identify the problems on which you are going to study, right? Then reviewing the all literatures related to that ethnic groups. उस ethnic groups के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब आपको कलेक्ट करके लानी पड़ेगी. Reviewing the literatures of that ethnic groups, उस ethnic groups के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके लानी. बेटी next is what? नहीं. And second step, means next step. Next is learn the culture, values, tactics, norms of any existing culture. मीन्स जिस कल्चर की आप स्टडी करने जा रहे हो पहले उस कल्चर की वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा. Because if you will not learn the cultural values and norms, then culture will not provide you the data. Next step is emergence in the culture. पहले learn कर लिया, फिर अब उस culture के अंदर घुसपैठ कर लो. Emergence in the cultures या cultural groups. Then follow the all etiquettes, values of that ethnic groups to realize for realizations. आपको उस ग्रुप की सारे कल्चर एथिक्स को आपको फॉलो करना. कल्चर्स एथिक्स फॉर रियलाइजेशंस यू नीड टू लर्न. आपको सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू? फॉलो तो कर लिया. देन data collection from the existing group. मीन्स जो भी ग्रुप्स है उसी से हम लोग डेटा भी कलेक्ट कर लेंगे. Then what we will do? Then that data after collections we will analyze. And slowly the next step is coming out of the groups. अब आप धीरे से ग्रुप से बाहर निकल के आए. Coming out of the groups and then generalized, elaborate your studies. अब आप अपनी स्टडीज को जनरलाइज कर सकते हैं. Generalized, elaborate explanations of the studies. आप उस ग्रुप की स्टडीज को सारा एनालाइज करो, जनरलाइज करो, एलाबोरेट करो. सो दैट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट इज देयर. सो
एडवांटेज तो हो गया ना कि क्यों प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेज क्या पैदा होंगे, छोड़ दो इसमें इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, तो आप इस स्टेप को फॉलो करके किसी भी ग्रुप की स्टडीज कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द रिलायबल डेटा। एंड लास्ट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। एक दो कुछ मत लिखो, सिर्फ समझ लो इसमें, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट कुछ मेंशन नहीं है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मींस a research which is based on any independent phenomena। किसी भी इंडिपेंडेंट फिनोमेना के ऊपर जब आप रिसर्च करते हो, सो दैट इज फिनोमेनोलॉजिकल विदाउट ऑफ एनी बायस। एंड जो कोई भी फिनोमेना, जैसे एक मान देयर इज अ स्कीमा, देयर इज अ फिनोमेना ऑफ स्कीमा। स्कीमा मींस व्हाट, बता सकते हो आप? हाँ, स्कीमा इज बेसिकली अ मेंटल फ्रेमवर्क्स। So you are if studying only the schema in the sense of social psychology, in the sense of, अब स्कीमा का कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? जीन प्याजे ने। अब जीन प्याजे के इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ जीन प्याजे से जोड़ के समझोगे तो वो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च नहीं माना जाएगा। इफ यू आर स्टडीइंग स्कीमा एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, आपने एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको समझना शुरू कर दिया, सो दैट इज फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। होता है कि नहीं होता है? अब स्कीमा जानते कौन कौन से होते हैं? सेल्फ स्कीमा, पर्सनल स्कीमा पढ़ा हुआ ना, सोशल स्कीमा, कल्चरल स्कीमा एंड role schema. So we have a different types of schemas. So if any researcher take to study select any studies as an independent phenomena, किसी भी phenomena को independently पढ़ने के लिए अगर वो select करता हो, so that is phenomenological research. So phenomenological research used and adopted by the research for conducting any specific works in a साइकोलॉजी। तो किसी भी फिनोमेना के बारे में इंडिपेंडेंटली जब समझने की कोशिश करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिनोमेनोलॉजिकल। और ये बात याद, जैसे फिनोमेनोलॉजिकल में एक ही पर्सन का हेल्प नहीं रहेगा, देयर विल बी नॉट अ मींस विदाउट एनी बायस। मींस फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में आपको बायस नहीं होना है। योर स्टडी शुड बी न्यूट्रल, यू शुड बी न्यूट्रल, और इंडिपेंडेंटली आपको उस टॉपिक के बारे में समझना है। दैट इज फिनोमेनोलॉजिकल। समझ में आई ना टॉपिक आपको? Discourse analysis. Discourse means that narration analysis का elaboration है। The discourse analysis means, देखिए थोड़ा सा समझ लो, discourse analysis means the debates, discussions in the societies, debate and discussions going in the societies if it is analyzed by the psychologist, so that reflects the psychological status of the society. एग्जाम्पल के तौर पे आज हमारे टेलीविजन पे किस तरह की बहस चल रही है, और जिस तरह की बहस चल रही होगी उसी तरह का डेटा हमारे माइंड में जाएगा, और उसी तरह के हमारे माइंड से थॉट प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसी तरह का हमारा बिहेवियर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ आवर टेलीविजन चैनल्स इंसर्टिंग कम्युनल डेटा इन आवर माइंड, तो निश्चित तौर से फिर क्या होने वाला होगा? कम्युनल थॉट्स हमारा माइंड प्रोड्यूस करेगा। आवर माइंड विल प्रोड्यूस कम्युनल थॉट। एंड ऐसे देखो आपस में सड़क पे क्या बहस चल रही है, दोस्तों में क्या डिस्कोर्स चल रहा है, मीडिया में पब्लिक में किस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है। सो लाइक इफ आई विल टेक द डिस्कोर्स ऑफ द पब्लिक, तो आजकल किसी को किसी की चिंता नहीं है, सबको किसकी चिंता है? अपनी। एक पॉलिटिशियन को देखो, वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहा है, इवन उसको ट्रुथ मालूम है,
एक पर्सन वो अपने किसी ग्रुप के लिए फेवरेटिज्म कर रहा है बिकॉज उसको ट्रुथ मालूम है। सो इससे जो सबको अच्छा बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि वुमेन सिक्योरिटी कहीं भी होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो प्राइम मिनिस्टर राजस्थान को भी बोलता है और फिर बंगाल को भी बोलता, फिर जाकर के वो मणिपुर को भी बोलता, तो मीन्स पब्लिक को क्लियर इंटेंशन पता चल गया कि पॉलिटिसाइजिंग दिस इश्यूज, इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने कल खूब डांटा इसके लिए, पता है आपको? मैंने हाँ हाँ पेपर में आया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी उनको, खूब चिढ़ाया, बोला कैसे कैसे कर सकते हो, द मणिपुर इशू इज डिफरेंट and there is a failure of law and order, and that is well organized crimes and where is an individual's crime, दोनों फर्क है सर। तो मीन्स ऐसे जो पब्लिक, आप सोचो गवर्नमेंट किस तरह का डिस्कोर्स लाना चाहिए। सबको पता है कि दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द हेड ऑफ द दिल्ली विल बी लीड बाय द दिल्ली's elected people, यही बोला ना, बट गवर्नमेंट ने तुरंत क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस ला दिया। ऑर्डिनेंस पास भी शायद कल हो गया कि नहीं हुआ, कल हुआ, अभी नहीं, अभी होगा प्रोसेस में। ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, बिल बन जाएगा, ठीक है सर। 5 ईयर तो मीन्स सबको मालूम है क्यों, बिकॉज वो वही पार्टी है जिसने बहुत बुरी तरह से सेंटर में उसको हराया, दिल्ली में हराया, तो चिढ़ तो होना स्वाभाविक सी बात। और वो एक ही पार्टी जो उससे आगे निकलती जा रही है करंट में, बिकॉज इट बिकम नेशनल पार्टी राइट नाउ। पंजाब में भी इनको पीछे किया, गुजरात में भी पीछे किया, दिल्ली में भी किया, और दिल्ली के बाद अलग अलग जो इलेक्शन है सब में उसकी वोट शेयर बढ़ते जा रहे हैं। राइट नाउ इट इज नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टीज के जो मेंबर चेयरमैन होता है उसको बहुत सारा प्रिविलेज होता है, यू नो, आई होप मेनी प्रिविलेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सब डिस्कोर्स ऐसे पब्लिक में क्या बहस चल रही है, हमारा न्यूज़पेपर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारा टेलीविजन क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बिकॉज आज आप सोचो क्या बहस चल रही है, हर बात में गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही मीडिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? आज छोटा बच्चा भी बता देगा कि देखो मीडिया डिफेंड कर रही है हर बात में। So media is not just a part of the government. Even media should criticize the government. एक भी कमियां बताओ पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट की बताई हुई मीडिया नहीं बताया सर, महिमा मंडल ही करता रहेगा। So it means because I'm not saying that कि I'm against all, obvious सी बात, थोड़ी सी मेरी झुकाव किसी और की तरफ हो सकती है, but I'm saying that should be rational. Like few TV channels are rational, they are not biased. Few news reporters are not biased. So discourse should be uh, basically free of the bias. And there was man Socrates, I hope you have heard. Socrates कहता है कि जिस तरह की सोसाइटी में डिस्कशन चलती है उससे ये पता चलता है कि सोसाइटी का मेंटल हेल्थ क्या है। If society is doing to healthy mental discussion, सर आप भारत में बहुत सारे रिसोर्सेस टेलीविजन इंडस्ट्री से बचा सकते हो। एजेंडा बनाओ ना आप कि जस्ट हाउ कैन वी एलिमिनेट, कि चलो ब्रिक किनल में काम करने वाले बहुत सारे लेबर्स, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे उठाएं, एक हफ्ते टेलीविजन पे काम करो, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क्स। वुमेन सिक्योरिटी के लिए खूब सारा डिबेट कराओ, जितना हो सकता कराओ, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल्स, जहां हो सकता कराओ, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, मीडिया पर, ऑटोमेटिक अवेयरनेस विल इंक्रीज। बट आप एक ऐसे डिबेट्स को बढ़ावा दे रहे हो जैसे टेलीविजन की न्यूज क्यों वेस्ट होती है। हम तो, हमारे घर में तो 2016 से बंद हो गया, नोबडी वाचिंग टेलीविजन।
बंद पड़ा, धूल मिट्टी खा रहा। रीजन बीइंग देयर इज नो फ्रूटफुल डिस्कशन। मैं एक बार देख रहा था, एक ज्ञानेश करके कुछ है टीवी का, आज से 2011 के इवेंट है। इतना बढ़िया कार के ऊपर इतना अच्छा डिबेट था, मींस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इतना खूबसूरत डिबेट। इससे इतनी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है, इससे इतना ग्रोथ होगा, इससे इतना ये प्रॉब्लम आएगी, ऑटोमोबाइल्स के क्या क्या और असर, उसमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठा दिया। बट राइट नाउ देयर आर द फ्यू पीपल्स हु कम्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर जस्ट वो तोता लड़ाने वाला काम चलता है। आई होप यू हैव सीन। हाँ, बुला लिया 5-5 10 हजार लोग, खूब तोता लड़ाते हैं। और कुछ है अभी तक? Psychobiography means history of studying the history of an individuals. Studying the history of an individuals, how he has taken the decision in any specific situation that reflects their psychobiography. Its best example you can take Mahatma Gandhi. Psychobiography. If you will see the biography of Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi has run only 3 movements in his life. 3 बड़े मूवमेंट्स महात्मा गांधी ने किए, एंड ईच मूवमेंट हैव 10 years गैप्स। 10 साल की गैप देखिए। क्या नाम था पहले? वो तो एक प्रोटेस्ट था। मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेस्ट। आंदोलन किया था ना कि धरना दिया था। तो इसी नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड एवरी मूवमेंट हैव 10 years गैप्स। हर मूवमेंट में 10-10 साल का गैप है। ध्यान से एनालाइज करो, बिकॉज गांधी अंडरस्टैंड, गांधी की गजब की साइकोबायोग्राफी, पूरे भारत को घूम करके वो देखता है व्यक्ति। मींस व्हेन ही कम्स इन 1915 in India, first 2 years he traveled to different parts of it। 45 ईयर का व्यक्ति भारत के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम करके देख रहा है कि भारत में क्या हाल है। Getting? And when he was at the age, उसके ठीक कुछ समय के बाद जब भारत को समझ अपने आ गया, then he has started चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट। और देखो भारत की साइकोलॉजी क्या है, भारत की साइकोलॉजी, पब्लिक इकट्ठा होती जादू टोने में। आप देखो कहीं पर जादूगर आ जाता है ना, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते, कोई मिरेकल वाली चीज हो जाए तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते। रामचंद्र नाम था जो इनवाइट किए थे, क्या नाम था? शुक्ला जी, रामचंद्र शुक्ला नाम था, राज शुक्ला, देखना एक बार, ठीक है। तो ही हैज इनवाइटेड टू महात्मा गांधी टू कम चंपारण, और ट्रेन आने से पहले बता दिया था कि चमत्कारी बाबा आने वाले हैं, जैसे आएंगे देख लेना सारी जो प्रॉब्लम है चंपारण की उसको मंतर कर देंगे। मालूम नहीं वाली घटना पता है कि नहीं पता? अच्छा नहीं पड़ा। तो वो पहुंच स्टेशन पे पहुंचने से पहले वहां की पूरी पब्लिक भीड़ लगा दी, घेर लिया। वहां का जो पुलिस ऑफिसर था बोला इतना महान व्यक्ति कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई, ले गए हिंदू थाने के ऊपर, सारे थाने को घेर लिया लोगों ने। खैर उनकी सारी बातों को बोला कि आप चाहते क्या हो बताओ, मैं मानने के लिए तैयार हूं। So that man, that उसके पास में चलो, खैर वहां पर चलो, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पीपल हैव ट्रस्ट। अरे यार ये तो महान व्यक्ति तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। Again he has invited by मजदूर लेबर्स ऑफ द मिल, अहमदाबाद लेबर मिल्स। बोले सर हमारी प्रॉब्लम सुन लो, आप यहाँ पर भी कुछ रिजॉल्व कर दो। Again he has done धरना प्रदर्शन विधि। Then the government again accepted his demands. Government has accepted his demand. So what is it? So it is reflecting अब गांधी की देखो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। In the 1920,
Gandhi has given a very simple statement. गांधी है वेरी गुड साइकोबायोग्राफी क्या थी? अगर किसी को कॉपरेशन मत करो वो भाग जाएगा अपने आप। मेरी क्लास में मुझे मत सुनो, आपस में फोन चलाओ, बातें करो, ऑटोमेटिक एक दिन लेक्चर दे लेना मैं बंद कर दूंगा। It will happen. So Gandhi have believed that if you will not go to the office of British, if you will not practice into the court of the British, if you will not go to the school of the British, British will automatically go back to the country, their countries. So ये बातें सुन करके सब लोगों ने कहा यार सही बोले, कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, स्कूल जाना छोड़ दिया, सब कुछ करना। खैर उसके बाद 1922 में साइकोलॉजी, और 2 साल जब प्रोटेस्ट हो जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। और देखो कभी भी जब एक बड़ा वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट बन गया, उस प्रोटेस्ट में दोबारा करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो कभी पब्लिक इकट्ठा नहीं होगी। एग्जाम्पल, करप्शन के खिलाफ आंदोलन करा था अन्ना हजारे ने, पूरी पब्लिक पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। बट आज के दिन में कोई करप्शन के खिलाफ आंदोलन करके देख ले, nobody will go. So गांधी अंडरस्टैंड, गांधी को समझ में आ गया था कि दोबारा ऐसा आंदोलन करूंगा तो फिर नहीं होगा। और दोबारा पब्लिक को रेडी करने में कितना टाइम लगा? 10 years, 10 साल लगाए। In 1930 he has started with the new names. सिविल डिसोबीडिएंट, हम आपके कानून को नहीं मानते, बात तो सेम ही थी। सिविल डिसोबीडिएंट मतलब क्या था ना, दैट्स डिसोबे द रूल्स, अगेन बात सेम थिंग, बट नेम चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और इस बार वो पैदल जा रहा, गली गली में घूमते घूमते दांडी मार्च, पब्लिक को कनेक्ट कर रहा, गांव के लोगों को कनेक्ट कर। पहले किसको कनेक्ट किया? पहले उसने मजदूरों को कनेक्ट किया, सेकेंड उसने मिल के लेबर्स को कनेक्ट कर लिया, अब उसके सपोर्टर लॉयर भी हो गए, टीचर्स भी हो गए। फिर धीरे धीरे और पॉपुलर। इन 1930 ब्रिटिश को लगने लगा यार इससे मैं लोगों से क्यों बात करूं, चलता इसी बुड्ढे के पास, बुड्ढा माफ करना, इज अवेयरनेस फॉर अदर ऑफ नेशन। सो चलो उनमें से बात करते हैं, थोड़ा मस्ती के तौर पे मैंने बोला चलो उनमें से बात करते हैं। पहुंच गए, बोले आप हम तो राउंड कॉन्फ्रेंस करने, राउंड कॉन्फ्रेंस याद है ना, राउंड कॉन्फ्रेंस करने चल रहे हैं। और कांग्रेस उसमें आएगी कि नहीं है वो चिंता, आप भी मैं हूं ना। सुनिएगा गजब की साइकोलॉजी। तब तक फिर लोग चिखम चिल्ली मचाना शुरू की 1930 के बाद। बट गांधी वाज नॉट इंपैक्टेड बाय दिस। फिर वो गांधी देखो नौजवान हो गया, कब? 1942 में। Means age is increasing and he become older, but his thought is become aggressive. ये साइकोबायोग्राफी। बस उसकी साइकोलॉजी देखो क्या बोल रहे हैं। 1942 डू और डाई, करो या मरो। पहले प्यार से बोलता है कि हम इनके कानून को नहीं मानते, हम इनके काम को नहीं करेंगे, बट बोला कि आप यहाँ चुपचाप चले जाओ, क्विट इंडिया में। क्यों? क्योंकि वी आर रेडी टू डू और डाई। उस साइकोलॉजी को समझो, उस पर्सन की किस साइकोलॉजी से जीता है। अब बेवकूफ व्यक्ति क्या करेगा? हर एक महीने का आंदोलन करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सेट की अच्छे दिन आएंगे, दूसरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े और फिर बोले कि अच्छे दिन आएंगे, तो सब कोई नहीं जाएगा। एक किसान आंदोलन एक बार हो गया, दोबारा किसान आंदोलन करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगी नहीं। Public likes basically new forms of the protest. Psychology सुन भाई, तो अब भी आंदोलन कोई करना जीवन में तो उस नया तरह का आंदोलन करना, और तब करना जब पब्लिक पूरा रेडी हो। साइकोलॉजी पकड़ना। महात्मा गांधी 10-10 साल में पब्लिक को तैयार करते हैं, तब जाकर के इस प्रोटेस्ट को वर्ल्ड वाइड करते। So Hitler's the psychobiography. हिटलर की क्या साइकोलॉजी? टेक द एग्जांपल, हिटलर वाज जस्ट अ सेना कमांडर। एक कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया गया, बोले आ जाओ,
बात कर थोड़ी सी बोलो, बोलने में बहुत हेसिटेट करता था क्योंकि सेना में स्पीच से तो कोई मतलब ही नहीं है। बोले आओ बोलो, और खड़ा करा दिया पोडियम के आगे, बोल ही नहीं पा रहा, लोग मजाक बना लिए, बोले दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द जर्मनी, बिकॉज जर्मन की रिपब्लिक, जर्मन की पार्लियामेंट का क्या नाम था जानते हो आप? वाइमर रिपब्लिक। और उनके ऊपर एक ट्रीटी लगा दी गई थी। कौन सी ट्रीटी थी? वर्साई ट्रीटी। सो वर्साई ट्रीटी में उनको बहुत सारा पैसा देना था, और अब वो पैसे देने के लिए वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जाएगी। वाइमर रिपब्लिक के पास कोई पावर नहीं है, ढंग का पॉलिसी नहीं। उसने लोगों को हवा भरा, सपने दिखाए, लाइक अच्छे दिन आएंगे। नौजवान उसके पीछे दीवाना हो गया and start to fight that what basically called Nazis. Nazis people start to fight. पढ़िए 10th क्लास की हिस्ट्री, गजब की लिखी हुई, खूबसूरत लिखा, मैं तो पढ़ा हूँ इसलिए मैंने देखा। सो उसने उसकी साइकोलॉजी को पढ़ी, स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो साइको हिस्ट्री में, साइको बायोग्राफी में किसी के जीवन को पढ़ो और उसकी साइकोलॉजी देखो, कैसे वो डिसीजंस लेता है, कैसे वो नए कितना स्ट्रांगली गेम को खेलता है। टेक द एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, गजब की साइको बायोग्राफी सर। दैट मैन हैज नेवर गिवन एनी इंटरव्यू, नो कंट्रोवर्सीज। इंटरव्यू दोगे कंट्रोवर्सी अपने आप पैदा हो जाएगी, बिकॉज सम पीपल लाइक यू, सम पीपल विल नॉट लाइक यू। जो उसने फील्ड पे खेल दिया बस वही देख लो, खुश हो जाओ सर। मींस देयर इज नो डाइवर्जेंस ऑफ एनर्जी। Getting? So psychobiography method is a way to understand the human psychology. So thank you, and next we will do the next concept, that is अब इसमें सारे मेथड खत्म हो गए और इसका डिजाइन नहीं बनना होता क्योंकि आता नहीं, और थोड़ी बहुत जो कोऑर्डिनेशंस वाले कोऑर्डिनेशन में हम कर लेंगे। So tomorrow onwards we will start statistics